जवां है जवां जोश तेरी पहचान है जवां है तू ही पाकिस्तान जब तक है जामे जान तू जोश को रख जवां है जवां हमको है यकीन आँख उठा कर देख ले किसी में इतना दम नहीं हम किसी से कम नहीं इसका हमको है यकीन जा वतन पर मार दे होगा हमको गम नहीं बस तब करेगा सारा ज़माना जब तक रहे I'm your compare Hina Hashmi. And I'm your compare Asma Khan. इब्तिदा है उस रब करीम के बाबरकत नाम से जिसके कब्जे में हमारी जान है. मैं आने वाले तमाम मोहतरम मेहमानों को खुश आमदीद कहती हूँ. As we know that today we are gathered here to celebrate the International Youth Day 2011 organized by the Pakistan Red Crescent Society, Dera Ismail Khan and Government University, DI Khan. All services ranks the same with God, and all praises be to the Allah, the most gracious and the most powerful. I would like to call on the stage Mr. Wajid Ali for recitation. Mr. Wajid Ali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان صدق الله العظيم. कल्ला हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद. दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद. नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं दावत देती हूँ हाफिज हसन अब्बास को. हुजूर नूर है महमूद है मुहम्मद है के लिए तड़प रहा लिए तड़प रहा ए
Bismillahirrahmanirrahim. Dear fellows, Assalamu alaikum. My name is Rahmatullah Asif and I am working with Pakistan Red Crescent Society as a hygiene promotion officer recently. And the topic which I wanted to share with you is what is volunteerism and what is its importance for ourselves, for our society and even for our own country. अंदाज़े बयां गर्चा मेरा शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात. इस शेर से अपनी बात को शुरू करने का मकसद ये है कि शायद मेरे लफ्जों में वो जादूगरी या वो शोला बयानी ना हो जो अक्सर मुकर्ररीन की स्पीच में होती है. But I really do hope that the thoughts which I wanted to share with you all will widen your mental horizon and you will understand the importance of volunteerism for your own selves, for the society and even for your own country. What is volunteerism or who is a volunteer? अगर आप इस बात को जनरली डिफाइन करना चाहें या सादा लफ्जों में डिफाइन करना चाहें तो एक मर्जी से किसी भी एक्टिविटी में या किसी भी कॉज में पार्टिसिपेट करे. बट इफ यू गो इन डेप्थ देन अ वॉलंटियर इज अ पर्सन हु डेडिकेट्स हिम और हर सेल्फ wholeheartedly, spiritually and religiously to the activity or the cause he is participating, और उस मकसद के लिए या उस मकसद के हसूल के लिए he or she leaves no stone unturned to achieve the desired task with three things in their mind and in their heart: honesty with the cause, to serve the humanity, or Entertain you guys. I like to call upon the stage Mr. Sayyid Bola, the TV star, for his famous Bola dance with sticks. Mr. Sayyid Bola. Now we are playing our theme song. हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर अकबर कुंडी, वाइस चांसलर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रहे हैं.
2011, organized by Pakistan Red Crescent Society. So for introduction, I would like to welcome upon the stage Mr. Tariq Habib, the DMO of Pakistan Red Crescent Society, DI Khan. Please welcome. Name, Honorable Chief Guest, Professor Dr. Mansoor Akbar Kundi Sahab, Vice Chancellor, Gomal University, Honorable Professors, Media Personalities and Journalists, dear students, I, Mr. Tariq Habib, Disaster Management Officer, Pakistan Red Crescent Society, extend my warm welcome. I would like to introduce Pakistan Red Crescent Society. Pakistan Red Crescent Society was founded on December 20th, 1947 by a constitutional order called the Pakistan Red Cross Order, issued by Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, Governor General of Pakistan and founder President of the society. The society was renamed in 1974 as Pakistan Red Crescent Society. Youth and volunteerism is the backbone of the Red Cross and Red Crescent movement and central to all activities conducted by Pakistan Red Crescent Society. The aim of Red Cross and Red Crescent movement is to improve the lives of the vulnerable people by mobilizing the power of humanity. Today, the Pakistan Red Crescent Society is proud to have more than 180,000 volunteers throughout the Pakistan. Dear youth, I will quote Allama Iqbal here, "Na ho na umeed kishte veeran se, agar nam ho to ye matti badi zarkhez hai saki." हम अल्लामा इकबाल के इस कॉल को आज के प्रोग्राम की जीनत बनाते हुए ये बावर कराना चाहते हैं कि लाजिम नहीं कि नौजवानों को हुकूमती या गैर मुल्की बैसाखियों की जरूरत पड़े, अगर वो अपने खुद ही के जज्बे को उजागर कर बहुत कुछ कर सकते हैं. My dream is to see each one of you as a creator, leader and maker of history. All of us here at AQ Auditorium will feel a sense of pride and joy when news about your endeavors and success reach us from all corners of the world. So dear youth, move ahead and challenge. Sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sail. Explore dream. March forward and make Pakistan brighter, greater and safer than ever before. Destiny of the nation is in the hands of the youth. You are the leaders of tomorrow. May God be with you in your endeavors. Thank you.